Good morning, everyone. I welcome you all on behalf of GSCA and Sports Authority of Gujarat. Let's start. आज हम डिस्कस करेंगे some puzzles and some games. ये position है. Now white to move and win. Find the best move for white. You can find matching attack. Use your queen, use your rook, and use your bishop. Let's check. First move यहाँ पे queen sacrifice, queen into pawn, king into pawn, then rook check, king goes back to g8 and then rook h8 checkmate. यहाँ पे मैं flip board कर रहा हूँ. अगर यहाँ पे black to play हो तो कैसे खेला जा सकता है. Same position and black to play. Simple rook mating thread दे रहा है. Now white to move. You can continue. काफी इजी विनिंग है अब यहाँ पे. सेम प्लानिंग के साथ वाइट खेल सकता है. सिंपल क्वीन इनटू पॉन, देन रूक चेक एंड रूक h8 checkmate. Next, white to move. Find mating attack. You can find mate in 4. Force checkmate. First move है यहाँ पे bishop into d7. Now queen will capture to d7. Now use your knight, use your queen, use your rook, try to checkmate.
Find best move for white. Knight f6 sacrifice. अभी यहाँ पे डबल अटैक है, नाइट इंटू क्वीन एंड नाइट से चेक है, सो ओनली ऑप्शन फॉर ब्लैक g into f6. Now very easy checkmate. Checkmate into दो में checkmate है यहाँ से. Use your rook and bishop. Rook g3. Now only option for black, king h8 and bishop into f6. Checkmate. Next position, white 2. फर्स्ट मूव है यहाँ पे d into e5. So black can move d into e5 और knight into e5. पहले हम चेक करते हैं knight into e5. Now very easy move, queen sacrifice. ये पोजीशन काफी बार हमने डिस्कस की हुई है. Yes, knight into d5. Now bishop will capture on d1. Now easy checkmate in 2. Find mate in 2. Bishop into f7. King will capture on f7. Sorry, king will move to e7. Now knight d5. Checkmate. Next, same position, थोड़े ही changes है, but you can plan same. You can give a queen sacrifice and try to checkmate. Use your bishop, use your knight, target f7.
Okay, let's check. अगर यहाँ पे खेल रहा है a6 black, then simple white can move knight to e5, queen sacrifice, bishop into d1. Now bishop f7 checkmate. अगर यहाँ पे ब्लैक मूव कर रहा है knight to f6, then how can we continue with white pieces? Let's white to play and win. You can target f7 pawn. Bishop can move to f7. Bishop into f7 sacrifice. Now king will capture and knight e5 check. King will move back to e8. Now simple piece recover, knight into f4. Sorry, knight into g4. Now knight into g4, queen into g4. Next puzzle, it's black to play and win. You can target g2 square, target king. You can use your bishop and rook for g2 square. Rook d g8. Now queen sacrifice, queen capture e7. Rook takes, king h1. Now find best move for black. Try to checkmate. Simple move bishop d5. Now planning is discover check. Move your rook and easy win.
Next position, white to move. Queen e5 check. So किंग के पास ऑप्शन है, किंग कैन मूव टू g8 और f6. रूक f6 यहाँ पे ब्लंडर है, क्योंकि रूक f6 में ये रूक जो है वो कैप्चर हो जाएगा. Simple, white can move king g5. Now easy win. So king can move to f8. Now it's white to move. How can white continue? White can move queen h8 check. Now rook d7. Now try to checkmate. Queen e6. Check. King f6. Now rook g6. Rook sacrifice. This is draw. क्योंकि अगर ब्लैक कैप्चर करेगा किंग इंटू g6, नाउ इट्स स्टीलमेट. अगर किंग मूव करेगा किंग e5 और f5, देन सिंपल rook will capture e6. So find any other option like force move queen c5 check. King e8. Now you can try to checkmate. King f6. Threat is queen c8 check, then queen e6 check, and queen f7 checkmate. So again rook sacrifice, rook d6. अगर यहाँ पे कैप्चर करेगा क्वीन, देन इजी ड्रॉ, स्टीलमेट. रूक d6 ओनली ऑप्शन है यहाँ पे ब्लैक के पास, और कोई मूव नहीं कर सकता है ब्लैक. सो नेक्स्ट पोजीशन, वाइट टू मूव. नॉर्मल पोजीशन में टू नाइट्स एंड किंग, एंड अगर ओपोनेंट के पास अगर किंग हो सो ड्रॉ पोजीशन है ये. लेकिन ये पोजीशन में क्या चेंज है कि एक पॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पे ब्लैक के पास. यू कैन चेक h5 पे एक पॉन एक्स्ट्रा है ब्लैक के पास. सो नाउ व्हाइट कैन ट्राई टू विन. कैसे कंटिन्यू करें? इट्स व्हाइट टू मूव.
try to checkmate. Knight can move to g6, so h4. ब्लैक यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि नाइट ये पॉन कैप्चर करे, सो इजीली ड्रॉ हो जाएगी फिर पोजीशन. But when you are playing with white pieces, don't capture this pawn and try to checkmate. So it's white to move. Find best move for white. Knight e5. h3, pawn promotion. Now white to move. Knight c6. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किंग जो है सारे स्क्वायर कवर हो चुके हैं, किंग कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा. सो नाउ ओनली ऑप्शन फॉर ब्लैक, pawn. Pawn will move to h2, then h1. So black to play h2. Now you can try to checkmate. It's mate in two move. दो मूव में यहाँ पे easy checkmate हो जाएगी. Use your knight and try to checkmate. Knight can move to b5. Now threat is knight c7. Check and mate. यहाँ पे h1 पे क्वीन बनाएगा ब्लैक, ओनली ऑप्शन. नाउ सिंपल विन, नाइट c7 checkmate. Next position, white to move. ये पोजीशन में हम ओपोजिशन का कैसे यूज करके विन कर सकते हैं ये आपको इजीली देखने को मिलेगा. सो नाउ व्हाइट टू प्ले, ट्राई टू विन. किंग विल मूव टू e2. नाउ किंग e7. किंग e3. किंग e6. नेक्स्ट मूव काफी इंपॉर्टेंट है. किंग को कहाँ पे प्लेस किया जा सकता है. फाइंड बेस्ट मूव फॉर व्हाइट.
किंग E4। नाउ ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, किंग D6 और किंग कैन मूव टू F6। लेट्स चेक किंग F6। नाउ you can calculate how can white win. King can move to D4 and try to capture this B5 pawn. ब्लैक ट्राई करेगा कि किंग F5 देन G4 करके H4 पॉन कैप्चर करे और ये क्वीन बनाए। So now you can take your time and calculate. Let's check king D5 first. Now king will move to F5, king C5, king G4, king into pawn, king into pawn. यहाँ पे सारे मूव्स अभी तक फोर्स मूव्स थे। So let's check. King A6. Now किंग के पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, किंग कैन मूव टू G4 और G3। लेकिन यहाँ पे आप चेक करें तो जब B8 पे क्वीन बनेगा तो G3 पे चेक आ रहा होगा। सो ब्लैक विल ट्राई टू मूव ऑन G4। पॉन प्रमोशन सेम, ब्लैक भी पॉन प्रमोट करेगा। क्वीन एंड क्वीन दोनों की यहाँ पे क्वीन हो गई है। अगेन ये ड्रॉ पोजीशन है, क्वीन G8। किंग को आना पड़ेगा यहाँ पे H3। अगर किंग मूव करेगा H4 या फिर F3 then this is lost because क्वीन H4 में सॉरी किंग H4 में क्वीन H8 चेक आ रहा है एंड क्वीन लॉस्ट। सेम अगर किंग F3 मूव किया then again a skewered queen A8 check and queen lost। तो कई बार काफी इजी पोजीशन में भी लॉस्ट हो जाती है, सो ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स चेक नेक्स्ट वेरिएशन। आफ्टर किंग F6 white can move king to F4। Again two options for black, king can move to E6 or G6। फर्स्ट हम चेक करेंगे किंग E6। Now you can calculate very easy win for white। Simple, white can move to G5 and king into H5 और ये easy queen हो जाएगी यहाँ पे। यस, क्योंकि किंग यहाँ पे बहुत दूर है, ये पॉन कैप्चर करेगा तो 3 मूव वेस्ट होगी, देन पॉन प्रमोशन, सो बहुत टाइम लगेगा उसमें। सो आफ्टर किंग E6
easy win. Let's check king g6. Now you can find best move for white. Simple move, king will move to e5. Now king g7. अभी दो options है यहाँ पे white के पास. King can move to f5, then g5 and try to capture this pawn. And second option is king d5, king c5 and try to capture b5 pawn. So give me answer. कौन सा वेरिएशन बेस्ट रहेगा यहाँ पे किंग के लिए? Okay, let's check. Okay, fine. फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे किंग d5. नॉर्मली ये पॉन इजीली कैप्चर हो रहा है. सो किंग d5 and king will move to f6, try to capture this h4 pawn. Now king c5, king f5, king into pawn, king g4, king c5, capture b5. सेम यहाँ पे जब आप किंग मूव कर रहे हो चेक कीजिए कि कौन से स्क्वायर पे क्वीन हो रहा है. सो क्वीन यहाँ पे b8 पे होगा. अगर आपका किंग g3 स्क्वायर पे है सो इंस्टेंट चेक लगेगा यहाँ पे. सो लेट्स चेक किंग g3, pawn promotion, again pawn promotion and queen. So this is lost position for black. अगर ये पॉन यहाँ पे h2 पे होता सो ये ड्रॉ हो जाती, लेकिन ये पॉन यहाँ पे है अभी h3 पे. सो दिस इज लॉस फॉर ब्लैक. यहाँ पे हमने देखा किंग g3, बट अगर यहाँ पे g4 भी है तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. Now if pawn will move to h2, then simple queen into h2 capture. So easy win for white. Let's move on. Next puzzle. White to play. You can target d5 knight, target king. Knights d4 and bishop c4 दो ऑप्शन है यहाँ पे.
पहले हम चेक कर रहे हैं बिशप C4। दो अटैक है यहाँ पे D5 स्क्वायर पर। So black will move rook a D8. Now B4. C into B4. Now find best move for white. कैसे कंटिन्यू करें? You can target this bishop. You can move your knight to D4 or you can move your bishop to B3. So काफी प्ले मिल रहा है यहाँ पे white को. Let's check knight D4. Now pawn capture, rook capture on C6, knight B4. Double attack, knight and rook. So now you can continue with white pieces. क्या खेला जा सकता है यहाँ पे white से? Only option bishop C4 check. Now king will move to H8 and rook E6. Pawn D3. Now simple rook will capture because यहाँ पे knight into D3 possible नहीं रहेगा क्योंकि queen पर attack. So better position for white. Next, rook ending. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक के दोनों रुक जो है वो काफी पावरफुल है. एक रुक G2 थ्रेट है एंड सेकंड रुक क्रॉस A2. G4. White G2 pawn प्रोटेक्ट कर रहा है. Now rook into A2. Now simple, use your rook. Rook can move to D1. Rook A4 check. Rook D4. Rook A5. It's white to move. Now you can target F7. You can target king. Use your rook. Rook D D8. Now threat is
Rook h8 check. King will move to g6 and second rook will come to g8 and checkmate. So mate in 2. इसलिए यहाँ पे ब्लैक खेल रहा है rook g7. Now h4 h5. Rook h8 check. Only option for black, king g6. Now how can white win? Find checkmating 4. Force mate. Very easy move. Give force moves like g into h5. So now only option for black, rook into h5. Again a force move, rook into h5, king into h5. Now you can find checkmate in 2. Force move, rook h8 check. Now king will move to g6 and pawn move to h5 and this is checkmate. Next, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाइट के पास 3 पॉन्स हैं एंड ब्लैक के पास 2 पॉन है. सो ये विन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? First, white can move f5, king e7, king can move to e5, king f7, g5, king e7. h5. Now white is trying to move g6. इसलिए ब्लैक यहाँ पे खेल रहा है g6. Now how can white continue?
h into g6, h into g6. Now simple f6. So king will move to f7. White to play. कैसे कंटिन्यू करें? King can move to d6. So black will move his king on e8. Now king e6, king f8, and simple pawn promotion. इसलिए यहाँ पे किंग के पास स्क्वायर है g7 एंड किंग e7. अभी यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है वाइट से, जैसे कि अभी किंग h7 मूव हो रहा है एंड इफ white will move pawn to f8 and make a new queen, so this is stalemate draw. So don't play fast. You can move your king to e8. So only option king g7 or king h8. Now make a new queen. This is easy winning for white. Okay, now we end our session. Now see you on Monday. Thank you.